बायट-सावर्त law. Okay, so suppose this is a wire, this is a conducting wire, and we want to find magnetic field at some point P. We want to find magnetic field at some point P. Okay, so how can you find? According to the Bayer-Sabat law, say suppose this distance from this is a small elementary length, okay, dl. Okay, this is r, the distance between position vector, distance between the position point and the elementary length dl, this is r, and the angle between dl and r is theta, is denoted as theta. We can write denoted as theta. Suppose current flow through the conducting wire I. Current is flow through the conducting wire I. Current flow through the conducting wire I. Okay. I current ए वायर भितर पास करुची आमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिवार कोठी अछि P पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिवार अछि केमिति फाइंड आउट करिबा गोटे स्मॉल एलिमेंटरी लेंथ नबा dl आउ हमें से पॉइंट को P को और dl सहित कनेक्ट करिबा कनेक्ट कला परे dl आउ P भितर गोटे एंगल आसुची दैट इज हम कहबा थीटा आउ एबे हमें को फाइंड आउट करिवार अछि मैग्नेटिक फील्ड रे इंटेंसिटी केते एट पॉइंट P फॉर द स्मॉल एलिमेंटरी लेंथ. ओके, so please note down dB for small elementary length dl. We can say dB according to the Bayer-Sabat law. According to Bayer-Sabat law, according to the Bayer-Sabat's law, dB for small elementary length and small elementary current, we can say dB is directly proportional to I directly proportional to dl and direct inversely proportional to r square and directly proportional to sin theta. dB is directly proportional का सहित dB directly proportional होची गोटे हला current I out हला dl where I here write is I is current flow through the wire dl कौन dl हला हमारा dl is elementary length यदि आ सहित हमें I मल्टीप्लाई करिबा I dl को कौन कुआ जाए elementary current आउ r कौन r हला distance between
the point P point P from the कोठू से पॉइंट कोठू डिस्टेंस आम मेजर करछे फ्रॉम दी एलिमेंटरी लेंथ ओके ये हला आर आउ गोटे टर्म्स आसछि थीटा व्हाट इज थीटा वी कैन से आम कौन कह थीटा को थीटा इज एंगल बिटवीन क्या भितर एंगल ये करुछि थीटा इज एंगल बिटवीन ओ सपोज दिस इज पॉइंट ओ पी एंड suppose this is point OA, so angle between, we can say angle between elementary length and positional vector of the point okay theta कहा भितर कौन एंगल theta is angle between the elementary length and positional vector of the point which point this is P, which is point P. Okay, so theta is the angle between the point elementary length dl and positional vector P from the point, okay, from the point of the elementary length. Okay, so now you can say dB is according to the Bayes law. What is dB? We can say dB is very small magnetic field, very small magnetic field. Okay, from this equation one we can say dB is equal to proportional IDL sin theta by r square. We can write this type of equation dB is equal to IDL sin theta by r square. dB is equal to IDL sin theta by r square. So from this equation if you want, okay, please note down वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट डाउन ऑल दी पॉइंट सो दैट आम आगू को जाइपरू. ओके मु भावुची तुम राइट डाउन हो सारी तुम मानकर. सो वी कैन से यही पटे लिभा जाउची राइट. वी कैन से dB. Okay, we can say dB is directly proportional to the IDL sin theta and inversely proportional to the r square. Okay, so if we want to remove the proportionality symbol then आमे कौन करिवु गोटे proportionality constant add करिवु. So dB is equal to K I dl
sin theta by r square. dB is equal to k I dl sin theta by r square. This is important. This is the important. So dB is equal to k I dl sin theta by r square. Please note down. Where k is proportionality constant. K is proportionality constant. K कौन proportionality constant जार वैल्यू होची k रो वैल्यू केते mu 0 by 4 pi mu 0 by 4 pi. ओके आ वैल्यू होची नोट डाउन कर 10 to the power -7 k रो वैल्यू होची 10 to the power -7 टेस्ला t मीटर by ampere 10 to the power -7 टेस्ला मीटर by ampere. आउ आर यूनिट आमे जदि बेर ओके म्यू 0 कौन म्यू 0 जमिति हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक रे एप्सिलॉन 0 थिला हमर कौन परमिटिविटी सिमिलरली म्यू 0 एठी कौन म्यू 0 हबा हमर एठी म्यू 0 इज परमिएबिलिटी ओके परमिएबिलिटी म्यू 0 को हमें कौन कहू परमिएबिलिटी और जदि हमें टेस्ला एठी कौन टी फॉर टेस्ला मैं लिखि दूची एटे टी को हमें डिनोटेट करू टेस्ला which is unit of magnetic field. M is meter and this is the ampere. So note down all these things and okay. एबे हमें कौन करिवे एटा थिला स्केलर फॉर्म रे एबे हमें वेक्टर फॉर्म रे लिखिबा राइट वेक्टर फॉर्म रे लिखिबा नोट डाउन करो ओके लेफ्ट साइड रे हमें लिखौचे हमें आपको वेक्टर फॉर्म रे लिखिया सो केमिति लिखिबा वेक्टर फॉर्म रे बायट्स-सावर्ट लॉ को ये थिला हमर स्केलर फॉर्म दिस इज ए स्केलर फॉर्म बायट्स-सावर्ट लॉ स्केलर फॉर्म दिस इज स्केलर फॉर्म बे हमें वेक्टर फॉर्म रे लिखिबा बायट्स-सावर्ट लॉ को राइट वेक्टर फॉर्म रे केमिति लिखिबा बायट्स-सावर्ट लॉ को वेरी इंपोर्टेंट पिला माने बहुत एटी कंफ्यूज हिजंती कि वेक्टर फॉर्म रे केमिति लिखिबा केमिति हला राइट सो मु सिंपल ट्रिक कहवा को जाउची सो जोटा कि तुम मानको बुझी पारिबो ओके वेक्टर फॉर्म रे केमिति लिखिबा बायट्स-सावर्ट लॉ देखो dB हमें जानि छु dB इज इक्वल टू KI dl sin थीटा बाय r स्क्वायर एटा हमें जानि छु ए इक्वेशन टा हमें पाई छु ए इक्वेशन टा हमें बायट्स-सावर्ट लॉ रो फाइनल इक्वेशन एबे कोन करिवु ना हमें गोटे ऊपर r मल्टीप्लाई करिवु गोटे तळे r मल्टीप्लाई करिवु dB इज इक्वल टू KI r dl sin थीटा dl
हमें के आई डी एल आर गोटे ऊपर आर मल्टीप्लाई कलु आउ इठी लिखिल हमें साइन थीटा बाय आर स्क्वायर एबे कौन हम आर स्क्वायर गोटे ऊपर आर मल्टीप्लाई कलु माने तले भी गोटे आर मल्टीप्लाई करू तले मल्टीप्लाई कलु सो फाइनली केते आसीगला के आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यू के आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यू एबे देखो कौन होची के आई को हमें बाहर को आनिबू बाई आर क्यू को भी बाहर को आनिबू डी एल आर साइन थीटा ओके कौन हम एटा डी एल साइन थीटा ताले एटा कौन हम ए क्रॉस बी दैट इज ए बी साइन थीटा हमें जानिचु ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा so dlr sin theta we can say ki by rq dl cross r this is the vector form so finally we get db is equal to ki dl into r by rq this is the vector form of the Biot-Savart law vector form of the Biot-Savart law this is the vector form of the Biot-Savart law so आमे गोटे नॉर्मल स्केलर फॉर्म देखिलु और इटा हला हमर वेक्टर फॉर्म सो वेक्टर फॉर्म केमिति लिखिलु हमें सिंपली आमे कोन कलु गोटे ऊपर r मल्टीप्लाई कलु और तळे गोटे r मल्टीप्लाई कलु ऊपर हे गला हमर कोन dl r sin थीटा तळे हे गला हमर एटा कोन r स्क्वायर इनटू r दैट इज rq आ ऊपर हे गला dl इनटू r sin थीटा आ से dl r sin थीटा को हमें लिखि परिलु dl r sin थीटा को हमें कौन लिखिलु dl क्रॉस r ओके dl क्रॉस r सो फाइनली हमें कौन कलु के आई आर क्यू को बाहर को धरी आसिलु और dl r sin थीटा को हमें कौन कलु क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dl इनटू r वेक्टर dl क्रॉस r सो डायरेक्शन कौन हम ओके नोट डाउन कर ओके ओके नोट डाउन कला ओके एक्चुअली तापरे लेफ्ट साइड रे मु लिखुची सो फाइनली आम दीटा इक्वेशन पाइलु गोटे हला db इज इक्वल टू स्केलर फॉर्म रे आउट वेक्टर फॉर्म रे राइट सो स्केलर फॉर्म रे कौन पाइलु आमे गोटे वेक्टर फॉर्म पाइलु गोटे स्केलर फॉर्म पाइलु राइट सो नोट डाउन करो स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म यही फाइंड आउट है कि डायरेक्शन आम जाना राइट मैग्नेटिक फील्ड रो डायरेक्शन कौन हम ताहा जानिया हमको वेक्टर फॉर्म को फाइंड आउट करिया पड़ला राइट सो स्केलर फॉर्म मैग्नीट्यूड दबा और वेक्टर फॉर्म हमर दबा डायरेक्शन ओके सो हमर स्केलर फॉर्म टा कौन होची db इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाय
r square. This is the scalar form. This is the scalar form. Scalar form. Similarly हमारे वेक्टर फॉर्म रे कौन आसीबा वेक्टर फॉर्म रे dv is equal to ki rq dl cross r. dl cross r. This is the vector form. This is the vector form. Vector form. This is the vector form. दीटा फॉर्म आसीगला आमको एबे इजीली आम फाइंड आउट करि परिबो डायरेक्शन. ओके डायरेक्शन केमिति फाइंड आउट करिवो डायरेक्शन केमिति फाइंड आउट करिवो एटा हला बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक. डायरेक्शन केमिति फाइंड आउट करिवो करंट फ्लो होची ताला हमर डायरेक्शन कोन केमिति फाइंड आउट करिवो डी द डायरेक्शन ऑफ नोट डाउन करा the direction of the magnetic field direction of the magnetic field the direction of the magnetic field direction को कौन हबा is perpendicular to the plane is perpendicular to the plane that contain to the plane of dl and r. To the plane that contain dl and r vector that contain dl and r. We can use another method, right hand thumb rule. We can use also. We can use right hand thumb rule. Right hand thumb rule. We can use right hand thumb rule. So it's all about Biot-Savart law. So हम वेक्टर फॉर्म भी देखी दिलु तार ओके राइट हैंड थंब रूल केमिति अप्लाई करिवो हम ए लेक्चर ही देखिवो. सो नोट डाउन करी निया नोट डाउन एति जहाँ इंपोर्टेंट तुमको लगुच नोट डाउन सब कर. ओके आउ कौन एथरे कौन डाउट रहिला कमेंट बॉक्स रे कमेंट रे कहबो कि कोठा डाउट रहिला तुमर राइट सो दैट कि हमें सीडो को क्लैरिफाई करि परिबो. ओके नेक्स्ट इज ये है ये वाला dB इज इक्वल टू ओके एबे डायरेक्शन जानिबा. ओके
एबे डायरेक्शन आमे जानिबा केमिति कोन डायरेक्शन रहिबो मैग्नेटिक फील्ड रे ता इम्पोर्टेंट। सो डायरेक्शन देखो डायरेक्शन केमिति रहिबो। ओके ओके सपोज करंट हमर फ्लो होची अपवर्ड करंट फ्लो होची बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एटा इंपोर्टेंट कांसेप्ट कहया गले। सो जदि हमें ए पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड देखिबो ताले हमको को डायरेक्शन रे रहइबो। ओके एटा लिखि दोची जाफल कि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हबो तमरा। जो पिला माने टिके नोट रही की बनौछो से माने वीडियो को पॉज करो और नोट बनाओ बोला नोट टा बहुत कम हेल्पफुल आसीबो कारण एते वीडियो तुम देखि परिबो नै। सो गोटे वीडियो को कंटिन्यूअसली 2-3 थर देखिबा इम्पॉसिबल तेणु करी नोट ही बनाओ राइट। सो नोट बनइले तुम बेनिफिट हबो। सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन हबो प्रथम फिगर एटा this is figure 1 this is figure 1 another figure current is going upward but the point is left to the wire okay एठी अछि right एठी अछि left। सो एटा ला फिगर 2 फिगर 1 रे कौन हबा राइट हैंड को रूल पकेब तमे डायरेक्शन बी रे जानिबा पई राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल को रूल पकेब राइट हैंड थंब रूल। ओके व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहूची जो डायरेक्शन रे करंट फ्लो होची जो डायरेक्शन रे करंट फ्लो होची सेही डायरेक्शन रे हमको कोन करिया पड़िबो हमर थंब टा को रखिया पड़िबो। ओके रखिलु जो डायरेक्शन रे करंट फ्लो होची से डायरेक्शन रे हम थंब रखिलु और से पॉइंट रे हमको फिंगर को कर्ल करबा को पड़िबो। फिंगर को कर्ल करिवो माने फिंगर को ए पॉइंट रे देखो राइट हैंड थंब रूल कोन कहला ऊपर को करंट जाउची और ए पॉइंट रे हमर सब आउ चारोटी फिंगर सी कौन होची को डायरेक्शन दोची इनवर्ड। तमे भी ट्राई करो कॉपी रे। सो एटा को डायरेक्शन दोची इनवर्ड। ओके ओके इनवर्ड। सो एठी कौन हबो ताले डायरेक्शन इनवर्ड हबो एठी हबो इनवर्ड। राइट हैंड रूल लगेलु थंब रूल एठी हला इनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली एठी को डायरेक्शन हबो एबे देखो करंट फ्लो होची आ एठी हबो कोन करंट ऊपर जाउची हमर चारटा फिंगर कोन होची बाहर को डायरेक्शन देखौची राइट। सो एठी हबो आउटवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन आउटवर्ड टू द प्लेन आउटवर्ड टू दी प्लेन एटा को हम लिखि परबा इनवर्ड टू दी प्लेन गोटे लिखिलु हमें आउटवर्ड टू दी प्लेन अनदर इज इनवर्ड टू दी प्लेन। बुझी हैला कि नहीं ना किसी डाउट अछि। ओके सो एबे मते कुह आउट आम नबू ए पॉइंट रे ए डायरेक्शन रे करंट नलु। सो हमको एटा कौन हबो सपोज ए पॉइंट रे कौन हबो राइट हैंड थंब रूल लगेलु। सो थंब हम कौन ए पॉइंट रे कौन होची प्रथम देखो ए पॉइंट नहीं गलो आम ए आ पॉइंट नहीं गलो बी ए रो डायरेक्शन कौन हबो राइट हैंड थंब रूल ए रो भीतर को जाउची। सो ए रो हबो इनवर्ड
inward to the plane, inward to the plane। आ बी रे कौन हबो, बी रे कौन हबो, बी रे हबो देख एटा कौन होउची हमकू आउटवर्ड आसुची, बी रे कौन हबो आउटवर्ड टू दी प्लेन, आउटवर्ड टू दी प्लेन, आउटवर्ड टू दी प्लेन, बी रे हबो आउटवर्ड टू दी प्लेन। ओके गोटे हला ए रे इनवर्ड टू दी प्लेन और बी रे हला आउटवर्ड टू दी प्लेन। किसी डाउट जदि अच्छी तुम पचारि पार कमेंट बॉक्स रे। ओके सो डायरेक्शन टा बहुत इंपोर्टेंट कारण बहुत पिला डायरेक्शन रे ही कंफ्यूज हो जाती जहाँ फल कि आगु को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करिवो न्यूमेरिकल सेक्शन रे। सो सिमिलरली जदि आमर करेंट, सिमिलरली जदि करेंट ए डायरेक्शन रे फ्लो होता एटा दे देबो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, पी और क्यू, पी रे ताले कौन होता आर अपोजिटा होता, पी रे कौन होता आउटवर्ड, पी रे होता आउटवर्ड और क्यू रे कौन होता, क्यू रे होता इनवर्ड, इनवर्ड, पी रे होता आउटवर्ड और क्यू रे होता इनवर्ड। ओके सो यही भाई आम डायरेक्शन फाइंड आउट कलु कि मैग्नेटिक फील्ड रे डायरेक्शन को भाई हम। तापर आम देख एबे हमर कौन कहला dB इज इक्वल टू KIDL sin थीटा फ्रॉम बायर्स लॉ बाय r स्क्वायर, एटा हमर बायर्स लॉ रो स्केलर फॉर्म। आ वैल्यू मैक्सिमम केते बेले हबो, केते बेले हबो मैक्सिमम, मैक्सिमम हबो केते बेले, मैक्सिमम हबो when theta is 90 degree और sin theta sin 90 ही जीवो हमरो 1 sin 91 ही जीवो और द इक्वेशन कौन आसीबो dB is equal to KIDL by r square, dB is equal to KIDL by r square। आउ सब बेले मिनिमम जीरो केते बेले हबो, जीरो केते बेले हबो जते बेले sin थीटा जीरो हबो, when थीटा sin थीटा जीरो केते बेले हबो when थीटा is जीरो, थीटा is जीरो sin जीरो is जीरो, so dB is जीरो, dB is जीरो। ये जो एंगल टा कहा भीतर होची थीटा सब मन रखी था एंगल बिटवीन पोजिशनल वेक्टर, पोजिशनल जो पॉइंट रे हम फाइंड आउट करिवु से तार पोजिशनल वेक्टर फ्रॉम दी पोजिशनल वेक्टर from the elementary length and the elementary
elementary length. बुझीगला. सो आमर मैक्सिमम आसीगला कि KIDL ताहले आमर एठी देख जीरो केते बेल हबो. प्रथम कथा ला मैक्सिमम केते बेल हबो जते बेले परपेंडिकुलर रहइबो ना. सो यदि आम एटू फाइंड आउट करवा ए पॉइंट रे एटा हबो मैक्सिमम. एटा को केस हबो एथरे करंट फ्लो होची जदि 90 डिग्री अंक भीतर हैला देन एटी हबो कोन B is dB maximum. ओके. और जदि किछि एंगल रे रहूची सो एई पॉइंट रे फाइंड आउट करिवो. सो किछि एंगल रे रहूची देन एठी कोन हे जिवो dB is dB sin theta. dB maximum sin theta component as जीवो sin theta which is less than dB. और जदि हमर से लाइन ऊपर से एक्सिस ऊपर जदि हमर कोन हबो एटा हला से एक्सिस ऊपर गोटे पॉइंट रे फाइंड आउट करिवो. सपोज ए पॉइंट हेला P एबे एक्सिस ऊपर अछि along the axis. सो कौन हबा ए पॉइंट ऊपर जदि ए वायर ऊपर कोइंसाइड करूची देन कौन हबो P और Q रे P पॉइंट और Q पॉइंट रे कौन हबो P और Q पॉइंट रे dB वैल्यू 0 हबो. dB वैल्यू केते हबो 0. काहे कि dB वैल्यू 0 हबो कारण से लाइन ऑफ लाइन हां करंट जो पाथ रे जाउची से लाइन रे से मीट करूची कोइंसाइड करूची. सो सेई पई dB वैल्यू 0 हबो. सो दीटा पॉइंट लिखिबे दबा थ्योरेटिकली एटा बुझी पारला. सो दीटा पॉइंट लिखि दबा ताले पॉइंट लिखा दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट. इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा dB 0 हबा. dB is 0 equal to 0 when the point lies on the axis of current element. This is point number 1 and point number 2 dB maximum केते बेला हबो जेते बेला हबो when the point P is perpendicular to the current element then dB is maximum. dB कौन हबो
सेतेबेले हमर हम डीबी मैक्सिमम रे। दुईटा पॉइंट नोट डाउन करनियो। सो आउट आम कौच करेन्ट एलिमेंट ये गोटे टर्म्स करेन्ट एलिमेंट एटा कौन एक्चुअली करेन्ट एलिमेंट जनरली आईडीएल को आमे कौन कहू करेन्ट एलिमेंट आईडीएल को हमें कौन कहू करेन्ट एलिमेंट। ओके आईडीएल को हमें कौन कहू करेन्ट एलिमेंट। नोट डाउन करनियो पॉज वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर और जदि किछि भी डाउट हो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो राइट। पूरा कंप्लीट फिजिक्स ये कंप्लीट हो जीवो माने ये चैनल रे आमे ट्राई करिवो कि पूरा कंप्लीट फिजिक्स को कवर अप करिवो बोथ सीएचएससी सीबीएसई और नीट आईआईटी लेवल पे राइट। सो जो माने भी देखुच से माने भी नोट डाउन कर जहाँफल कि हेल्पफुल हम एग्जाम टाइम रे। ओके लिभे दबा। ओके लिभे दबा मको ओके एसआई यूनिट ऑफ एबे हम को एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रो एसआई यूनिट कौन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कहि परिबो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही सिंपल एसआई यूनिट हला मैग्नेटिक फील्ड रो टेस्ला गोटे साइंटिस्ट टेस्ला जने साइंटिस्ट तांको ना अनुसार मैग्नेटिक फील्ड रो यूनिट हला टेस्ला। सो टिकेट नोट डाउन लिखियार अछि टेस्ला को केमते डिफाइन करिवा। According to टेस्ला को केमती डिफाइन करिवा हमें जानी छु कौन dB इज इक्वल टू KIDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। ओके सो यदि if I is 1 ampere dl is 1 meter r also 1 meter and theta is 90 that means sin theta is 1। सो dB फाइनली केते आस जीवो ए इक्वेशन रे पुट हम यदि ए डाटा वैल्यू से इक्वेशन रे हम दबु ताली के कोन आसीबो dB वैल्यू आसीबो सब k I वैल्यू 1 dl वैल्यू 1 sin थीटा वैल्यू 1 बाय r वैल्यू 1। सो dB वैल्यू आसीबो k so dB value is k value which is mu 0 by 4 pi so mu 0 by 4 pi
सो म्यू जीरो रो वैल्यू केते म्यू जीरो रो वैल्यू थाए 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 सो म्यू जीरो जगह आम कौन लिखू 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 डिवाइड बाय आउ कौन रहा 4 पाई डिवाइड बाय 4 पाई एबे कौन हम 4 पाई कैंसल आउट हे सो फाइनली केते आसीबो 10 टू द माइनस 7 10 टू द माइनस 7 आउ यूनिट हला टेस्ला सो एटा नोट डाउन ये नोट डाउन प्रथम कर तापर टेस्ला को आम डिफाइन करूँ सो टेस्ला को केमिति डिफाइन करूँ किए कहि परिबो एटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर जाफल कि बहुत बेनिफिट हम सो कौन कलु आम ये वीडियो रे सॉरी ये कॉन्सेप्ट रे के वैल्यू को आम किसी के आई वैल्यू को आम 1 एम्पियर नेलु डीएल को 1 मीटर नेलु आर को 1 मीटर नेलु थीटा को 90 डिग्री नेलु और साइन थीटा आमर हो गला 1 और म्यू जीरो हो गला केते 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 मते गोटे कथा कह कि आम एत सब कलु कौन पाई कारण आमको डीबी को के सहित इक्वाल करियर अच्छी के वैल्यू है म्यू जीरो बाय 4 पाई म्यू जीरो बाय 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 बाय 4 पाई सो म्यू जीरो वैल्यू केते आमको म्यू जीरो वैल्यू होची केते 4 पाई इंटू 10 टू द माइनस 7 सो फाइनली 10 टू द माइनस 7 टेस्ला so then how can you define Tesla is very important concept एटा नोट डाउन हला लिभेबा ओके सो टेस्ला को केमिति डिफाइन करिबा टेस्ला डिफाइन करिबा टेस्ला को एबे बुक रो डेफिनेशन अनुसार ही करिबा टेस्ला को सो टेस्ला केमिति डिफाइन हबो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टेस्ला देखो टेस्ला दस टेस्ला को केमिति डिफाइन करिबो one Tesla is 10 to the power 7 times 10 to the power 7 times actually केते आस्तिला actually dB is equal to 10 to the power minus 7 Tesla एउठो हमें फाइंड आउट करिब यदि 1 टेस्ला केते हबो टेस्ला इज इक्वल टू केते हबो 10 टू द 7 एपटू आस जीवो राइट 10 टू द 7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड the magnetic field produced by conducting wire of length 1 meter and carrying current
and carrying current of 1 ampere carrying current of 1 ampere at a distance of at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter from it and perpendicular to it, that is perpendicular distance, यदि नोट डाउन कर टेस्ला को केमती डिफाइन करलु देखो कौन थिला dB value is KIDL sin theta by r square यदि आमे सब I को 1 करिवो so dB value is यदि I को 1 करिवो dl को 1 करिवो sin theta को 1 करिवो r square को 1 करिवो फाइनली हमर पाक रहला dB is equal to k रो वैल्यू होची कोन mu 0 by 4 pi mu 0 रो वैल्यू होची 4 pi into 10 to the minus 7 so finally dB is equal to 10 to the minus 7 tesla SI unit रे नोचू सब ताले SI unit of magnetic field is tesla okay so tesla SI unit hela tesla so 10 to the minus 7 tesla 1 tesla को जदि डिफाइन करिवो सेपटे हे जिवो 1 by 7 7 to the minus 7 सेपटू गला कोन हे जिवो पॉजिटिव हे जिवो 10 to the plus 7 so 1 tesla is equal to 10 to the plus 7 so एबे हमें पढिबो नोट डाउन कर सरला नेक्स्ट हमें ओके एटा को लिखु छे हमें सो कोन कहला एक्चुअली 1 टेस्ला is 10 to the 7 times the magnetic field produced by conducting wire of length कौन length कितने लो हमें 1 meter carrying current of 1 ampere at a distance 1 meter from it perpendicular distance means perpendicular distance means theta is 90 सो ये थिला टेस्ला को डिफाइन करिवार ओके सो जो माने लेखिनो से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर हम एठी पूरा कंप्लीट फिजिक्स रो नोट माने हैंड रिटन नोट भी अवेलेबल करेबो राइट सो ओके ओटा लिखि दबा यदि भलो लागुची लेक्चरटा ताले शेयर करो तुम फ्रेंड मानक सहित आउ ता सहित चैनल को भी सब्सक्राइब करो जहाँ फल कि आमको भी किसी हेल्प हो पारिबो आम चैनल ग्रो हो पारिबो राइट सो एबे गोटे ओके तापर हैला कोन ना
गोटे एग्जांपल आम करवा राइट गोटे एग्जांपल राइट डाउन करा क्वेश्चन गोटे एग्जांपल a wire placed along the north south direction along the north south direction carries a current of 8 ampere from south to north find the magnetic field find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from the piece सो क्वेश्चन है यहाँ आमर एग्जांपल नंबर 1 जोटा कि बायोट-सावर्ट लॉ रे यहाँ एग्जांपल नंबर 1 आमर सो कौन कहला क्वेश्चन रे ए वायर इज प्लेस्ड along the north south direction okay north through south direction carries a current 8 ampere from south to north okay so given from south to north find the magnetic field due to 1 centimeter piece माने 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from the piece okay so प्रथम कौन डाटा अनुसार आम फिगर बनइबू सॉल्यूशन कौन कहला ए वायर इज प्लेस एलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ओके ये भाया वायर प्लेस अच्छी आउ कौन कहला अधेर करेंट फ्लो होची 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ थ्रू नॉर्थ ओके साउथ थ्रू नॉर्थ को करेंट फ्लो होची केते होची 8 एम्पियर हमको कौन करियर अच्छी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करियर अच्छी 1 सेंटीमीटर डीएल डिस्टेंस दे देला ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस सपोज ये पीस रहला 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर एट ए पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम ए पीस माने 200 सेंटीमीटर ए लाइन टा इंपोर्टेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को डायरेक्शन ए पॉइंट रू नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्शन नॉर्थ जो माने बुझी पारन नॉर्थ एटा आ ईस्ट हला एटा ईस्ट एटा और एटा हला नॉर्थ ईस्ट कोड आसीबो तांको मिडिल तांकर पूरा मिडिल ले ही आसीबो नॉर्थ ईस्ट राइट सो ए डायरेक्शन को कोन कोनती नॉर्थ ईस्ट
सो ए डायरेक्शन रे सी केते अछि केते पॉइंट डिस्टेंस अछि पी 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर एबे कहि छी मैग्नेटिक कौन फाइंड आउट करे पे कहि छी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओके हमें कौन कहबा dB at point P dB at point P is equal to कौन ए dB at point P is equal to हमें कौन कहबा KIDL sin theta by r square ओके k वैल्यू को mu 0 by 4 pi mu 0 by 4 pi this is the value of k what is the value of I is 8 ampere 8 what is the dl is 1 centimeter okay dl is 1 centimeter 1 centimeter is ताकू SI रे कन्वर्ट करले कोन हबो 10 to the minus 2 meter so कोन हबो 10 to the minus 2 meter dl गला I गला और sin थीटा कितने एंगल अच्छी ये 45 डिग्री सो sin 45 वैल्यू कितने दिस इज sin 45 by r square ओके डिवाइड बाय r कितने r अच्छी 200 सेंटीमीटर आपको मीटर रे कन्वर्ट करले कितने आसीबो 2 मीटर सो r square means 2 रो स्क्वायर सो फाइनली आपको कैलकुलेट करबा आंसर आसीबो तमरो sin 45 रे वैल्यू होची 1/√2 सो फाइनली कितने आसीबो 1.4 आपको सॉल्व करले कितना आसीबो 1.4 into 10 to the power minus 9 10 to the power minus 9 टेस्ला 10 to the 9 टेस्ला बुझी पारलो ना कार किसी डाउट रहउची एटा बुझीला कि नहीं एक क्वेश्चन गोटे एग्जांपल टा बुझीला कि नहीं ना जदी बुझी होनी ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो केमिति लागुची लेक्चर हला जदि किसी इम्प्रूवमेंट करिवार अछि देन हमो कहइबो हम इम्प्रूवमेंट करे पे ट्राई करिवो ओके सो आज के भाई लेक्चर एटी स्टॉप कर दबा भला कारण इनडायरेक्टली 1 आवर हे गलानी पाखे पाखी सो हम जा प्लानिंग करथलु आ टिके और हाफ एन आवर लागि जीवो